भाई रेंज है उसको। इंटरसेप्टर विदाउट एग्जॉस्ट। यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त आयुष और आप देख रहे हैं द हंग्री कम्यूटर। तो गाइस, आज है संडे और आज मैं फिर से निकल पड़ा हूं संडे राइड के लिए। और हम आज फिर से राइड करने वाले हैं स्पीडस्टर्स के साथ में ही। मैं जा रहा हूं सदर TNT, जो कि है हमारा मीटर पॉइंट। उसके बाद हम वहां से जाएंगे वाटरफॉल पास में। और सदर TNT सदर से पड़ता है वो करीबन 65 किलोमीटर्स के आसपास। तो इट्स गोना बी अ गुड राइड। अब वो प्लेस कैसी है, उसका रास्ता कैसा है, जाने लायक है या नहीं, तो ये सब कुछ जानने के लिए बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। गाइस, वीडियो पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। ओके, तो चलते हैं आप सीधा फ्यूल पॉइंट पे, क्योंकि फ्यूल इंडिकेशन है लो और फ्यूल होना करवाना बहुत ज़रूरी है। पहला स्टॉप लगेगा फ्यूल पॉइंट पे, सेकंड लगेगा वहीं पे शायद हमें देंगे शाम भैया के साथ हम जाएंगे TNT पे। TNT में जहाँ बाकी राइड कर रहे हैं और वहाँ से राइड करेंगे, जाएंगे सीधे नई लोकेशन। तब तक के लिए बाय। तो शाम भैया का फ्यूल अप हो जाए, उसके बाद हम निकलते हैं यहाँ से पर लोकेशन मीटिंग पॉइंट की तरफ, जो कि है सदर TNT। तो सीधे आपसे वहीं मिलते हैं। बाय। गाइस, ब्रीफिंग हो चुकी है राइड की और हम थोड़ी देर में राइड शुरू करने वाले हैं। और आज हमारे साथ है इंटरसेप्टर 650, एक V15, R15 डोमिनार, R15 V15 FZ, R15 CBR, V4 जिक्सर, MT NS, 2 R15, 3 R15 और एक पल्सर 200 RS और एक रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। तो गाइस, हम करने वाले राइड को शुरू। तो मिलते हैं आपसे सीधा राइड। और पूरे वीडियो तक एंड तक बने रहिए ताकि आपको सब कुछ पता चले, जगह कैसी है, रूट कैसा है, सब आपको एंजॉय करिए वीडियो को। मिलते हैं आपको सीधे राइड। बाय बाय। Told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to me, answers getting lost. So I watch my back and keep it moving to the front. And remember that the world's yours, do it how you want. You've been waiting here for too long, think it's time for you to move on. Realize that there's real lies in these real times, so be strong. I've been waiting all my life, and it was right before my eyes. Watching all this time slip by, now I realize. You know I've been waiting, 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 you know I've been waiting. But will you wait for me? Forever grinding, waiting for my time to shine just like a diamond. But life is rough and I ain't with that funny stuff. I use it all as motivation, but it's hard to have the patience. Watching time fly by might be the hardest thing I have to do in life. Frustrated that I ain't where I want to be yet, but I know that I'ma make it if I chase that check. Yes. Cause I done seen the time go by for too many years now when the stars were aligned. Cause I done seen the time go by. Yeah, I done seen the time go by. I've been waiting all my life, and it was right before my eyes. Watching all this time slip by, now I realize. I've been waiting all my life, and it was right before my eyes. Watching all this time slip by, now I realize. You know I've been waiting, 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 you
गाइस हम रुके थे यहाँ पे थोड़ी देर के लिए लोकेशन पता करने के लिए आगे, क्योंकि हमने थोड़ा सा रास्ता आगे पीछे हो गए थे। कोई बात नहीं, पता चल गया है कि हमें थोड़ा आगे से यहाँ से जाना है और हम अभी लोकेशन पहुँच जाएंगे। लाइट एग्जॉस्ट साउंड तो आप सुन जाएंगे, चलिए सुनाता हूँ आपको थोड़ा पास से। Interceptor without exhaust. चलिए अब सीधे वाटरफॉल में मिलते हैं आपसे। बाय। तो गाइस हम आ चुके हैं घुघारा वाटरफॉल निवास में। तो यहाँ के शॉट्स मैं आपको दे दूँगा। रास्ता काफ़ी प्यारा है। स्टार्टिंग में जब आप बरेला से टर्न लेते हैं तो कुछ 2-3 किलोमीटर तक बस आपको थोड़े से ऊपर खाबर पैचेस मिलेंगे, लेकिन उसके बाद भाई साहब रास्ता बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा सीनिक व्यू आता है। और मतलब जो कर्व्स आते हैं ना यार, उसमें लीन करने का मज़े ही कुछ और है। अगर आपको लीन करना पसंद है, मतलब आपके 2 रास्ते हैं तो आप हाईवे से आ जाओ या ये रास्ता पकड़ लो। पहले स्टार्टिंग में हम लोगों को लगा था कि शायद हम लोगों ने गलती कर दी है वो पैचेस को देख के कि यार इस रास्ते पे नहीं आना चाहिए था, बहुत सारे गड्ढे हैं। पर यार सर बताऊँ, बड़ा मज़ा आया। हाईवे ज़्यादा बोरिंग होता है, ये बहुत अच्छा है, मज़ा आ गया यहाँ पे। तो चलिए आपको वाटरफॉल दिखाता हूँ, लोकेशन दिखाता हूँ, देन करते इस वीडियो को एंड। ओके हम निकल रहे हैं वापस होम टाउन की तरफ, अपने डेस्टिनेशन जहाँ हम आए थे घुघारा वाटरफॉल निवास से वापस जबलपुर की तरफ जा रहे हैं। वहीं पे रास्ते में हम करेंगे ब्रेकफास्ट और फिर जाएंगे अपने घर। तो ब्लॉग करता हूँ यहीं पे एंड। उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो करिए लाइक, चैनल करिए सब्सक्राइब और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। चलिए मिलते हैं आपसे सीधे नेक्स्ट ब्लॉग पे। मैं हूँ आपका दोस्त आयुष विश्वकर्मा, द हंग्री कम्यूटर, साइनिंग ऑफ। बाय बाय।